Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Welcome all of you. So today we are going to discuss very important point related to japa and some few videos also I played in the beginning. Those who were present, they would have seen what Prabhu was explaining about mind, about the holy name, how we should chant, in what consciousness we should chant, and something about habits also today we'll learn, and some concepts of the soul from Bhagavad Gita. Okay, so we'll start with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Shri Krishna Balaram ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaurang ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. So quickly we'll go to Bhagavad Gita verses and finish today's verse, and then we'll come to some habits, how to handle the habits and chanting. So yesterday we had discussed very nicely about all these things, Sat, Asat, what is truth, what is not truth, which is eternal, which exists eternally, that is truth, and which perishes over a period of time, that is not truth, that is false. So this body which we have is false, and the soul which is eternal, that is truth. So anything which is material, that is false. Anything which is spiritual, that is truth. So that's how we can see our body, our relationship with this material world. Anything in this material world is false. False relationship, false identity, false nature. The nature also sometimes we become no conscious. Oh, mera nature to aisa. That nature is also temporary. So everything is asat, false. The real truth is which is eternal, and the soul is eternal. Our relationship with Krishna is eternal, and that relationship we can re-establish again by removal of ignorance that I am part of this material world. So currently what is our understanding, that we think that we are the part of this materialistic world, we belong to this world. That is they are very much convinced, we are in the mind that we belong to this world, but actually we don't belong to this world. For example, I'll give a simple example. जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं 4 साल, जैसा भी रूम मिले बेकार, अच्छा एसी लगा हो नहीं लगा हो, गर्मी हो कुछ भी हो रूम, बट वी आर नॉट टू मच बॉदर्ड बिकॉज वी नो दैट 4 इयर्स का मैटर है, 4 साल के बाद तो छोड़ना ही वैसे भी। मेस का खाना कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, तेल ज्यादा हो ऑयली हो बहुत ही स्पाइसी हो, यू जस्ट टॉलरेट एवरी, यू जस्ट सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव कि चलो आज वहां खा लेंगे यहाँ खा लेंगे। यू आर नॉट टू मच ऑब्सेस्ड विद कि मेस का खाना ये कैसे दे रहे हैं, ये रूम जो है वो बेकार है, बिकॉज यू थिंक दैट दिस इज द टेम्परेरी अरेंजमेंट, आई एम नॉट हियर फॉर लॉन्ग टाइम। 4 इयर्स का बात है, 4 साल के बाद तो हम आई विल कंटिन्यू फॉर माई जॉब एंड आई विल हैव माई ओन। So we are not so much concerned about the poor facilities which are given to us in the hostel or mess in college time, because that time we are focused on our eternal business. What is our main business? That I have come here to perform my study nicely, achieve good results, and finally get a job, good job. And then when you get a good job, where you will go earn money and make your own place, उसको अच्छा बनाएंगे, वहां पर अच्छा है ना, वेल फर्निश्ड हमारा घर होगा और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, उसके लिए वी आर कॉन्शियस। वी आर नो नॉट टू मच कंसर्न अबाउट जो हॉस्टल में खाना मिल रहा है, बेकार मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। वी जस्ट ट्राई टू टॉलरेट, है ना, टॉलरेट करके आगे बढ़ो।
अगर कोई थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है तो हम बोलते हैं ठीक है यार, एक कितने दिन की बात है जी, 4 साल ना, 1 साल निकल गया, 2 साल 3 साल की बात और है, उसमें भी कुछ दिन घर आने जाने लगा रहेगा. सो वी आर नॉट टू मच बॉदर्ड अबाउट इट ना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस इज टेम्परेरी. 4 साल 3 साल जितना भी हो, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स मान के हम उसको जस्ट वी मूव ऑन इन आवर लाइफ, थिंकिंग दैट आई हैव कम हियर फॉर सम डिफरेंट पर्पस, नॉट फॉर दिस मेस का खाना सही करना या हॉस्टल सही करना, क्लीन करना, नहीं. जितना हो सकता है कर लेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. हमारा मेन बिजनेस, जो मेन टारगेट है, वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. यही तो होता है ना हम लोगों का. ये दिस इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, यस और नो. वी आर वेरी मच कॉन्शियस कंसर्न्ड अबाउट आवर मेन थिंग, प्राइमरी एक्टिविटी, टारगेट जिसके लिए हम आए हैं. वैसे ही, वैसे इन द सेम वे, आप इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करो, बस इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दो आप, एंड नथिंग एल्स. इन द सेम वे, ये मटेरियल वर्ल्ड में जो हम रह रहे हैं ना, ये भी टेम्परेरी है. हमारा घर टेम्परेरी है, हमारे रिलेशनशिप टेम्परेरी. जैसे कॉलेज में मेनी टाइम्स हमारा जिससे रिलेशनशिप होता है, जो फ्रेंड्स बनते हैं, वो पता नहीं कहाँ किस किस अलग अलग कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, तो इन बहुत सालों तक कांटेक्ट में भी नहीं रहते हैं, हम भूल भी जाते हैं कॉलेज में हमारे कितने फ्रेंड्स थे, एक दो को छोड़ के याद भी नहीं रहता कि कौन कौन मेरा फ्रेंड था, क्योंकि सबका अलग अलग प्लेसमेंट हो जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है. सो वी आर नॉट टू मच कॉन्शियस अबाउट फ्रेंडशिप ऑल्सो. वहां पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, बट वी आर नॉट सो मच बॉदर्ड अबाउट दैट इंटरेक्शन ऑल्सो, दैट फ्रेंडशिप की यार ये फ्रेंडशिप टूटनी नहीं चाहिए, ये इसको हमें लास्ट करना है, ये शुड गो ऑन टिल लाइफ. नो नो. इन द सेम वे, here in this material world also, all our relationships are temporary, our accommodation is temporary, our place of residence is temporary, everything is temporary. कितने साल के लिए आए हैं? For time being. So we should not become very much concerned, conscious, और इसके पीछे ही पड़ गए, नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा करना है, ये चेंज करना, वो चेंज करना. अल्टीमेटली दिस इज ऑल टेम्परेरी. जितना कर सकते हैं उतना करो. whatever you can do which is there in your circle of influence. मैंने सर्कल ऑफ कंसर्न एंड इन्फ्लुएंस दो चीज डिस्कस किया है, वेदर you remember or not, I don't know, but circle of concern and circle of influence is very very important to understand. सर्कल ऑफ कंसर्न में है, यस मेस का खाना खराब है, हॉस्टल खराब, ये आपका कंसर्न है, दैट इज वेरी जेन्युइन कंसर्न. बट ये आपका इन्फ्लुएंस में है क्या? नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, अपने माइंड में प्रॉब्लम मत डालो. जस्ट डू वट एवर यू कैन इन्फ्लुएंस, otherwise move forward for your main target. So like this, in the same way, material world also, जितना आप कर सकते हैं change, that much only you can, we should do. Otherwise we should not become obsessively attached to this material world. We should focus on our eternal business. What is eternal business? Here it is written, reestablishing our eternal relationship with Krishna. दिस इज आवर इटर्नल बिजनेस. जैसे कॉलेज में आने का बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस क्या है? जॉब लेना ना. इन द सेम वे मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पर आए हैं, we have been given a chance, an opportunity we have been given in this human form of life. Once this form is missed, then you cannot get this human form again. After many millions of lifetimes we get this human form of life. मनुष्यम दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम. This human form of life is very rarely achieved. There are 8,400,000 species of life. This is not exaggeration, this is not mythology, this is given. पूरा डिटेल बताया गया है कि कौन से स्पीसी कितनी है. जलजा 9 लक्षण, जल में 9 लाख प्रकार की योनियां पाई जाती हैं. स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. कृमयो रुद्र संख्य के 11 लाख प्रकार के इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, ये सब पाए जाते हैं. पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं. चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं. हम सोचते हैं सारे मनुष्य एक ही है, नहीं, 4 लाख वेराइटी के मनुष्य हैं. वेस्ट इंडीज अलग, केन्या अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, अमेरिका अलग, इंडिया में भी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, है ना, अलग अलग स्पीसी है. स्पीसीज आर बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस. किसी कॉन्शियसनेस डाउन है, किसी का हाई है. सो आपके रूममेट का भी हो सकता है स्पीसी अलग हो आपसे, because of it depends on the consciousness. Species are divided on the basis of consciousness. किसी consciousness एकदम materialistic animalistic है, किसी consciousness बहुत ही high है. So in human also 4 lakh categories are there.
एंड 63 लक्षाणी पशुव, और 30 लाख प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, पशु पक्षी नहीं, पशु, 20। सो इस तरीके से 84 लाख योनियां, उसमें ह्यूमन बर्थ पाना, दैट टू सच अ improved form of intelligence in India, to get birth is very very rare. People look for taking birth in India because Bharatvarsh is celebrated in the whole universe. Krishna, when he appears in this Brahmanda, he comes in Bharatvarsh, Vrindavan, which is very near to Jaipur, 5 hours journey. So in Vrindavan, Krishna comes. Lord Rama comes in Ayodhya. All these spiritual places are there in India, Bharatvarsh. So to take birth in Bharatvarsh is not very easy. It is rare. In foreign world you go, it is very difficult for the people to know about spiritual life. In India, it is naturally people practice spirituality by birth. Culture is there. So to take birth as Indian is very very rare. And after achieving that birth, that too in a very religious family, very spiritually inclined family, it is even more rare. And after that, come in contact of Prabhupada, understanding Bhagavad Gita here, sitting and discussing, it is rarest of the rare, rarest of the rare. Even great demigods are aspiring, Bhagavatam it comes, great demigods are aspiring to take birth in India and follow spiritual life, devotional service to Krishna. Many demigods are taking birth now in India to follow this chanting Hare Krishna mantra. Prabhupada used to say this, because process is very simple to go back to Godhead. Demigods know this, कि यार ये chanting Hare Krishna करके they are easily going back to Godhead, and we are here rotting since millions of years. What is this business? Simple business they have followed and going back to Godhead. Their eternal problem is solved eternally. So it is very very rare, this human form, that too in India, in such a spiritually inclined family, come in contact of Prabhupada, chanting Hare Krishna. It is really very very, we cannot imagine what fortune we have got. So अब इस फॉर्च्यून तक पहुंचने के बाद भी अगर छोड़ दे, हमारे हाथ से स्लिप कर जाए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा. सो इस फॉर्च्यून को स्लिप ना करने दें, इसको पकड़ के रखें अच्छे से. ये डायमंड मिल गया आपको, अब डायमंड हाथ में रहे, अच्छे से पकड़ के रखें. कहीं है ना, आर्टिफिशियल डायमंड के चक्कर में ओरिजिनल डायमंड छूट ना जाए. माया हमें मटेरियल ग्लिटर दिखाती है कि आर्टिफिशियल डायमंड, वो डायमंड है, बट दैट इज आर्टिफिशियल, वो नकली डायमंड है. लेकिन माया बताएगी नहीं, वो असली, आ जाओ, चमकाएगी ज्यादा, उसमें चमक ज्यादा दिखा के आपको अट्रैक्ट करेगी. गेट अट्रैक्टेड बाय दैट मटेरियल अट्रैक्शन. बट हमें कॉन्शियस रहना कि वो क्या है, माया है, इल्यूजन है. जैसे रेगिस्तान में आपको पानी दिखता है, लेकिन है क्या पानी? नहीं, माया है वो, इल्यूजन. उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लगेगा मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन वो क्या है, वो नकली है, वो कुछ नहीं ऐसा होता. जितने लोगों ने एंजॉय किया सब फ्रस्ट्रेटेड हैं आज. मैंने ग्रुप में भी कल शेयर किया, एक डॉक्टर ने सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर ली, है ना. डॉक्टर इज सपोज टू गाइड द पीपल, दे आर सपोज टू काउंसिल द पीपल हु आर डिप्रेस्ड, हु आर इनटू एंजाइटी. अभी के डॉक्टर तो खुद ही एंजाइटी में. सो सेंस ग्रेटिफिकेशन में माया दिखाएगी बहुत अच्छा है, ये एंजॉय, डायमंड चमक रहा है, आ जाओ, उसको छोड़ो, ये क्या पकड़ रखे हुए, तो बेकार सा डायमंड है. डायमंड नहीं, ये तो लोहा है, ये मिट्टी है, मिट्टी. बट नहीं, हमें समझना, दिस इज डायमंड, एंड मटेरियल जो नेचर दिखा रही, जो माया दिखा रही, दैट इज नॉट एक्चुअल डायमंड, दैट इज इन फैक्ट लोअर देन दिस टूल. सो वी शुड बी इन दैट कॉन्शियसनेस, दैट मूड, है ना. इस अपॉर्चुनिटी को हमें भुनाना है. वी शुड नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप फ्रॉम आवर हैंड. So this is our eternal business. For this we have to focus. एंड टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम कर सकते हैं, जो हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है और इन्फ्लुएंस में भी है, उसको आप फोकस करके जितना इन्फ्लुएंस कर सके उतना करो. जहां तक आप कर सकते हो उतना करो. हाथ पैर मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये करना, वो करना है, वर्ल्ड को चेंज करना है. बहुत सारे लोग आके चले गए चेंज करके. नेपोलियन आया, पता नहीं कौन कौन आए, हिटलर आया, अलेक्जेंडर आए, औरंगजेब, पता नहीं, अनलिमिटेड पीपल केम एंड गॉन, बट हु नोज. सो दिस इज टेम्परेरी वर्ल्ड. जैसे कॉलेज में आते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं करें, और हम अपने टारगेट पे फोकस कर दें. वैसे ही यहाँ हमारा मेन टारगेट है
हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके अपने आप को रियलाइज करना हम सोल हैं, एंड गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड गो टू योर ओन प्लेस। वहां जाके आप सारा प्लान करना। जैसे हम कॉलेज में कुछ ज्यादा प्लान नहीं करते, खुद का घर बनाते हैं, वहां पर सारा प्लानिंग करते हैं, वैसे ही अपने घर जाओ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ के हम लोग निवासी हैं, रेसिडेंट्स हैं, वहां जाके देयर यू प्लान नाइसली। ये जितना आप कर सकते हो, विच इज देयर इन योर इन्फ्लुएंस, दैट मच ओनली वी डू। अदरवाइज वी बिकम मैड आफ्टर मटेरियल अचीवमेंट्स, और मिल भी जाता है तब भी हम मैड ही रहते हैं, और नेक्स्ट 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 फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इन दिस रेस वी गेट lost into this material world, so we should not do this। सत असत का अंडरस्टैंडिंग हमेशा बहुत क्लियर रहना है, सत क्या है असत क्या है। सो आज के श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं, नो दैट विच परवेट्स द एंटायर बॉडी इज इंडिस्ट्रक्टिबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द इम्पेरिशेबल सोल। सो सोल इज pervaded in entire body through consciousness, and that is indestructible, consciousness cannot be destroyed। So this is very nice purport, so many important points Prabhupada has written here। So I want some of you to read this today. Who will read this? Because purports are very nice. Anybody would like to volunteer to read first highlighted? Harika, please read। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna। This verse more clearly explains the real. This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. Everyone is conscious of the pains and pleasures of the body in part or as a whole. The spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one body are unknown to another. Therefore, each and every body is the embodiment of an individual soul. Soul's presence. The pains and pleasures of one body are unknown to another. Therefore, each and every body is the embodiment of an individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived as individual consciousness. This soul is described as 1/10 part of the upper portion of the hair point in size. The Yes. Shvetashvatara Okay. Upanishad. So this is written in Shvetashvatara Upanishad, in a very famous scripture. It is clearly written here that soul का जो dimension है, सोल का जो डायमेंशन है, दैट इज 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। आप हेयर को लो, टिप ऑफ द हेयर यू डिवाइड इनटू 100 पार्ट, एंड one part of that you take again and divide into 100 part। So that is the dimension of the soul. It is given into Shvetashvatara Upanishad, and here as it is written, pains and pleasure of one body cannot into another person। Consciousness that is limited to the body only, one body। What is happening to your body I cannot know, and what is happening to my body you cannot know। Pains and pleasures are felt same, है ना, चाहे हिंदू बॉडी, चाहे मुस्लिम बॉडी है, चाहे क्रिश्चियन बॉडी है। इफ आई पिंच यू, इफ यू आर हिंदू or you are Muslim, then pain and pleasure will be the same। So it shows that actually everybody is soul, everybody is consciousness, not that you will feel, if I pinch a Muslim he will feel some another pain and pleasure, no, or he will not feel pleasure pain only, he will feel pain and pleasure because everybody is soul only। Okay, next। So this is small, I myself will read। When the upper point of hair is divided into 100 parts, like, yeah, this is I have explained। Now next who will read this from here, yellow highlighted? कौन पढ़ेगा? Nobody? Yes, go on। Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna। This very small spiritual spark is the basic principle of the material body, and the influence of such a spiritual spark is spread all over the body as an influence of the active principle of some medicine spreads throughout the body. This current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of the presence of the soul.
Any layman can understand that the material body minus consciousness is a dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination due to the spirit soul. Yes, just see so nicely Prabhupada has explained. So logical it is. है ना, dead body क्या है? What is the definition of dead body? This body minus consciousness is dead body. है ना? एंड प्रभुपाद ने मेडिसिन का एग्जांपल लिया कि जैसे आप मेडिसिन खाओ, इट इज इफेक्टिव थ्रू आउट द होल बॉडी, है ना? द इन्फ्लुएंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. इन द सेम वे द प्रेजेंस ऑफ द सोल is felt throughout the whole body. It is so nice Prabhupada has explained. So here it is, the current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of the presence of the soul. What is the proof? The consciousness is the proof of the presence of the soul. अगर कोई बोले क्या प्रूफ है हम सोल है, तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं consciousness is the proof of the presence of the soul. Yes, next. So this is written in मुंडक उपनिषद. ये मुंडक उपनिषद में आता है. और यहाँ पर अब नेक्स्ट एक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि अच्छा सोल जो है वो हम लोग हैं, तो सोल कहाँ सिचुएटेड है? सोल हार्ट में सिचुएटेड है. तो कोई बोलेगा अच्छा हार्ट अगर हम ऑपरेट करें तो दिखेगा सोल? नहीं दिखेगा, क्योंकि सोल का डायमेंशन क्या है? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, तो ये हार्ट में अगर कितना भी ऑपरेट करो, काट के देखने की कोशिश करो, यू कैन नॉट सी द सोल इनसाइड द हार्ट. नाउ सेकेंड थिंग, नाउ क्वेश्चन कम्स कि अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, हार्ट ही चेंज कर देते हैं लोग, तो क्या सोल चेंज हो गया? सो इसका अंडरस्टैंडिंग ये श्लोक से मिलता है हमें मुंडक उपनिषद में. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि एटॉमिक सोल एक्चुअली में हार्ट में बैठी नहीं है. यहाँ पर कैसे सोल जो है हार्ट में कैसे सिचुएटेड है यहाँ पर लिखा गया. दिस एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग इन द 5 काइंड्स ऑफ एयर. प्राण अपान व्यान समान and udana is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of material air, its spiritual influence is exhibited. तो 5 तरीके की हवा, एयर, प्राण अपान व्यान समान and उदान. In fact, there are 10 kinds of air inside our body. 10 तरीके की हवा, एयर्स. It is right. It is nicely given in योग शास्त्र. योग शास्त्र जो कि कपिल, लॉर्ड कपिला has given सांख्य philosophy. In that this portion of subject matter is studied very nicely about all kinds of air, chakra, everything. No, this is the subject matter of Sankhya philosophy. Very detailed understanding is given. Prana, apan, saman. What is prana vayu? What is apana vayu? Say 5 kinds of air are there in the heart, and the soul is floating in that air. Not that soul is situated. बैठी है soul. Soul कैसे बैठ सकती है material चीज में? Soul is spiritual and heart is material. No. तो मटीरियल स्पिरिचुअल कोई कॉम्पिटेंसी थोड़ी ना होगा. सो सोल इज फ्लोटिंग इन 5 काइंड्स ऑफ एयर इन द हार्ट. सो वेदर यू डू हार्ट ट्रांसप्लांट और वट एवर यू डू, सोल इज नॉट गोइंग टू लीव. क्वेश्चन जब लोग रेज करते हैं कि अच्छा हार्ट चेंज कर दिया, सोल भी चेंज हो गई? नहीं. सो हार्ट इज जस्ट लाइक ए चेयर. जैसे मैं चेयर में बैठा हूँ अभी ना, तो आप ये चेयर हटा दो तो मैं दूसरा चेयर लगा उससे बैठ जाऊंगा. ऐसा नहीं कि आप चेयर हटा दो मैं भी हट जाऊंगा ना. So soul has decided to be here in this body for that particular time period by higher arrangement. परमात्मा कृष्णा ने बोला है सोल तुम्हें इस बॉडी में ही रहना है इतने साल तक, तो सोल को उस बॉडी में रहना ही पड़ेगा. बिकॉज सोल अपने आप से इंडिपेंडेंट नहीं एक्ट कर सकती. सोल इज कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ परमात्मा. आत्मा इज कंट्रोल्ड बाय परमात्मा. परमात्मा इज कृष्णा. तो कृष्णा इज ऑलवेज देयर विद अस, along with us in the heart. Soul and Krishna, we Jiva and Krishna, we are always there in the heart. Sitting place of us and Krishna is heart. But heart change करने से ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा change हो गई. Krishna said to Atma, you be here in this pranavayu only, in this 5 kinds of air, so Atma will be there. नया हार्ट लगाओगे उसमें बैठ जाएगी. But during heart transplantation, first of all, you cannot see the soul because the size is 1/10,000 tip of the hair. And second thing, heart is the seat of the soul, and in the heart 5 kinds of air are floating, circulating. So in that air soul is situated. तो अब क्लियर हो जाता है हम लोगों को. अच्छा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी सोल चेंज नहीं होता, क्योंकि ये रीजन है ना. यहाँ बहुत अच्छे से इस शास्त्र में बताया गया.
तो एक्चुअली में सब कुछ शास्त्र में बताया है, हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं और खुद ही हम एथिस्ट बन जाते हैं और खुद ही हम बोलते हैं सोल और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट we read scriptures Bhagavad Gita, then all the understanding is given. Okay, this pink ये highlighted कौन पढ़ेगा इसको? Who will volunteer to read? Sai Naresh. Hare Krishna Prabhuji. हाँ पढ़. This atomic soul is situated in the heart of every living entity. And because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of the material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in the heart, along with the super soul. And thus, all the energies of bodily movement are emanating from this part of the body. Yes, just see so nicely Prabhupada is written, no? The individual soul is definitely there in the heart along with the super soul. क्योंकि हार्ट सुपर सोल हार्ट में सोल बैठी है, तो सारा जो एनर्जी का सोर्स है ना वो हार्ट ही है. इवन मेडिकल साइंस सेज दैट. येलो वाले में पीयूष आप पढ़ो, इसमें प्रभुपाद क्लियर करते हैं कैसे सारी एनर्जी हार्ट से आती है. यस पीयूष, कंटिन्यू. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs when the soul passes away from the disposition activity of the blood generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of energy is the soul. Medical science, however, does not admit that the heart is the seat of all energy of the body. Out of sheer foolishness, the scientists, even though उनको पता है हार्ट से एनर्जी आ रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोल से आ रही है. हमारे शास्त्र बोल रहे हैं क्योंकि सोल हार्ट में है, इसलिए because of the presence of soul and super soul, heart is pumping और वहां सारी एनर्जी फ्लो हो रही है. ब्लड में जो रेड कार्पसल्स हैं वो बिकॉज ऑफ द पंपिंग, और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन भी फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ पंपिंग. इफ हार्ट स्टॉप्स पंपिंग देन ऑक्सीजन विल नॉट फ्लो इन द ब्लड, एंड जैसे ही ऑक्सीजन नहीं फ्लो करेगा ब्लड में, ब्लड बिकम्स वाइट फ्रॉम रेड. ये सारा मेडिकल साइंस को नॉलेज है, बट दे विल नॉट, दे आर सो foolishly they will not accept that there is something called soul. Actually क्या है ना, people are, इसके लिए भी जैसे एक साइंटिस्ट है यान स्टीवेंसन, उसको जेरॉक्स प्रोसेस का जो डिस्कवरर था, he gave some funding, कुछ $1 lakh, something like that. He funded him that you go and discover that there is no reincarnation. क्या बोला? There is no reincarnation. To whom? To Ian Stevenson, who is the MD. He is a professor in West Virginia School of Medicine. एक वहाँ पर स्कूल ऑफ मेडिसिन करके वेस्ट वर्जीनिया में है इंस्टीट्यूट. वहाँ पर ये एमडी की एज ए एमडी ही वाज वर्किंग ओवर देयर. सो जेरॉक्स प्रोसेस को जो डिस्कवर किया ना, उसका जो डिस्कवरर है, ही फंडेड हिम सम $1 million that you go and discover, find out that there is no reincarnation. This Indian belief system is all bogus. You go and prove this. But this Ian Stevenson started a research to disprove the reincarnation, but much surprise to this discoverer of Xerox process, this Ian Stevenson discovered ulta, inverted, that there is reincarnation, and reincarnation is concrete fact, and there is something called soul, spirit soul, which moved from one body to another body, and all the experiences are, you know, जो भी एक्सपीरियंस एक बॉडी में है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं दूसरे बॉडी में. एंड सो देयर इज रीइंकार्नेशन फिनोमेना इज कॉन्क्रीट फैक्ट, इट इज नॉट माइथोलॉजी. उसने एक दो केस नहीं, ऐसे 2000 से 3000 केसेस उसने डिस्कवर किए. किसने? इयान स्टीवेंसन ने. आप यूट्यूब पे सर्च करना इयान स्टीवेंसन के रिसर्च, उसके जो उसने जो डिस्कवर किए सारे इंटरनेट में पड़े हैं, अवेलेबल हैं. सो इवन साइंटिस्ट, इवन फॉरेनर्स, क्रिश्चियंस, दे आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग. रिसर्च करने से पता चलता है, बट you require some funding, some support of a higher
leaders, but because leaders are not supporting, fundings are not given, so इस चीज को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जा रहा है. But if you give funding, if somebody invests some money, so many data points are there, so many unlimited data points are there to establish very strongly that yes, our civilization existed since time immemorial. जैसे अभी क्रिश्चियनिटी बोलती है कि क्रिएशन आया कुछ 2500 साल पहले, 2000 साल पहले. मुस्लिम्स बोलते हैं क्रिएशन आया कुछ 2500 साल पहले, उससे कुछ नहीं था, सब डेजर्ट था, मोहम्मद पैगंबर केम, फिर वहां से होता है सारी चीजें शुरुआत. लेकिन हमारा कल्चर, हमारा सनातन धर्म बोलता है कि वी आर एग्जिस्टिंग सिंस टाइम इमेमोरियल. और इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ है, मेनी पीपल हैव प्रूव्ड इट. उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन क्या उसको प्रमोट नहीं किया जाता ना, उसको प्रमोट करने वाले नहीं है सबका, बिकॉज मेजॉरिटीज आर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, so they don't want our culture to be promoted, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता. समथिंग कॉल्ड फॉरबिडन आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया, आर्कियोलॉजिस्ट का काम ये रिसर्च करके स्टैब्लिश करना, डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या है ट्रूथ क्या है. तो आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं कि जो कल्चर है, सिविलाइजेशन, ये सिंस टाइम मेमोरियल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो डिस्कवर करते हैं, साइंटिस्ट लोग उसको दबा देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, बिकॉज ये हमारे कल्चर को फिर ग्लोरीफाई करेगा ना, कि कैसे हमारे स्क्रिप्चर्स इतना सही बोल रहे हैं, इतना करेक्ट बोल रहे हैं. तो उसको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है. हमारे हिंदू में इतने फाइटिंग्स होते हैं तो कोई करता नहीं है, सब एथीस्ट बने बैठे हैं. आज देखो कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में, आते कितने हैं, 15 से 20 लोग, क्योंकि एथिस्टिक टेम्परामेंट लेके बैठे हैं सब लोग. और क्रिश्चियन मुस्लिम्स हैं, वो अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने में लगे हैं. तो हमारा कल्चर कौन प्रमोट? बट एक्चुअली सो मेनी एविडेंसेस आर देयर, इट इज वेल प्रूवन फैक्ट. हमारा कल्चर बहुत ही, ये इटरनली एग्जिस्ट करता है. कृष्णा, राम, ये एग्जिस्ट करते हैं. ये राम सेतु रिसर्च हुआ, डिस्कवरी हुई है, एग्जिस्ट करता था, ये ट्रुथ है. द्वारिका अंडर वाटर, ये रिसर्च हुआ है, उन्होंने पता लगाया है, फाइंड आउट किया, यस इट वाज एग्जिस्टिंग. ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि बहुत सालों से हैं, और उसका डिजाइनिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो कहाँ से आया इतना इंटेलिजेंस, कहाँ से आया इतना सारे जो भी एपरेटस हैं, जो भी चीजें चाहिए होती हैं उसको बनाने के लिए, कौन लाया है, कैसे बनाइए. तो इट इज अ बिग मिस्ट्री, बट नोबडी इज प्रमोटिंग दिस, नोबडी इज गिविंग फंड्स टू ऑल दिस थिंग्स. तो देयरफॉर ये ऐसे ही पड़ा है. एनीवे, सो इट रिक्वायर्स, इवन मेडिकल साइंस समझती है कि जो सोर्स है वो हार्ट है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है. सो here Prabhupada writes, neither Vedic knowledge nor modern science denies the existence of a spirit soul in the body, and the science of the soul is explicitly described in the Bhagavad Gita by the personality of Godhead himself. तो भगवद गीता जैसी ड्राइविंग फैक्टर क्या है, वहीं से स्टार्ट किया कृष्णा ने नॉलेज देना कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, वी आर बियॉन्ड दिस बॉडी. So we have to understand that we are not merely limited to this bodily concept of life. We are higher than this body. We are spiritual spark. So this we have to understand very nicely. And the next verse, Krishna says, only the material body of the indestructible, immeasurable, and eternal entity is subjected to destruction. Therefore, fight your descendant of Bharat. तो यहाँ बोल रहे हैं बॉडी केवल डिस्ट्रॉय होता है, हमारी सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है. So body is perishable by nature, it may perish immediately or it may do so after 100 years. It is a question of time. आज मरे या 100 साल बाद मरे, मरना तो है. बॉडी Prabhuji, your voice is not coming. Prabhuji, you are not audible. ये देखो आप कैसे हमें बॉडी मिलती है, यहाँ से. दिस इज द स्टार्ट पॉइंट. सो अ थॉट reap an action, so an action reap a habit, so a habit reap a character, so a character needs. So सारी चीजें कहाँ स्टार्ट होती हैं? From where everything started? Thought से. What is your thought process? जैसा आपका सोच होगा वैसा ही आपका एक्शन होगा.
जो माइंड में जैसा चलता है ना, माइंड में जो आप प्रोसेसिंग करते हैं, जो थॉट प्रोसेसिंग चल रहा है, वही तो आपके एक्सटर्नल में आएगा ना, एक्शन में आएगा. एंड एनीथिंग यू कीप डूइंग, इट बिकम्स हैबिट. On an everyday basis, you keep doing anything, that action becomes habit. Just like brushing the teeth, every day we do, so it has become a habit. आप नींद में भी हैं, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, but still you go and put your brush in your mouth, and you, without conscious effort, you are brushing your teeth because it has become a habit. Naturally मोबाइल लेते ही व्हाट्सएप खोलने की हैबिट बन गई, because many times you have done it, so naturally it is become a habit कि चलो थोड़ा व्हाट्सएप खोल लेते हैं. आपने मोबाइल उठाया कुछ और करने के लिए, लेकिन कहाँ फंस गए आप? व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में फंस गए, बिकॉज ये हैबिट बन गया. अब एक्शन आपने इतनी बार कर लिया कि नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू हैबिट. और हैबिट से क्या होगा? आपका कैरेक्टर डेवलप होगा. किस तरीके का आपने हैबिट डेवलप किया, वैसा ही कैरेक्टर होगा. हाँ डाल दो. Prabhuji, your voice is not coming. Hello. That kind of thought you will acquire in your body mind system. Suppose a person is having thought of, some material advancement, some startup करना, उसको बहुत ही पैसा कमाना है, बहुत लाइफ में आगे बढ़ना, he is very much passionate about his life, बिजनेस करना, ये करना, ऐसे करना, मल्टीफोल्ड करना, मल्टी बिलियनियर बनना, ऐसे. सो अगर आप उससे एसोसिएट करते जाएं तो उसका थॉट आपके माइंड में भी ट्रांसफर हो जाएगा, एंड योर थॉट प्रोसेस विल आल्सो मूव इन दैट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. सो दिस ऑल थिंग स्टार्ट विद एसोसिएशन. एसोसिएशन थॉट से फिर बाकी सारी चीजें कंटिन्यू हो जाती है टिल योर डेस्टिनी. सो फाइनली इट डिसाइड्स योर डेस्टिनी. So it is very, very important how you associate, what kind of person you are associating with. If you associate with the devotees, you will develop devotee quality. If you associate with non-devotees, demons, you will develop non-devotee demoniac qualities. So this is very, very important to understand. Now I will share one or two video about getting up early in the morning. How it is very, very important to make a habit of getting up early morning. So मैं एक आपको वीडियो शेयर करता हूँ, आप लोग इसको देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो. I don't party. Not that I'm saying party is bad for health. I don't say that. But I believe there's no need to because I don't enjoy it. I sleep every day at around 9, 9:30. I get up at 4 o'clock. दुनिया में मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा. I have always seen the sun. So it is nothing. This is all in your hands. Your health is in your hands. Your life is in your hands. It is the most simplest thing. We make it, एकदम confusion कर देते हैं. We make it very complicated. जैसे हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है, सिंपल सा हिसाब, उसका हिसाब है. तो जैसे अक्षय कुमार बोल रहा है कि आई गेट अप 4 o'clock एवरी डे, एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा हो. आई स्लीप एवरी डे 9:30, 10 o'clock. See, he's a star, he's Bollywood, so busy he would be, but still he has designed his lifestyle in such a way that he will get up every day 4 o'clock. Because anybody who has understood what is the value of getting up early in the morning, उनको सुबह में सोने का मन ही नहीं करेगा. They will feel uncomfortable. 4-5 बजते ही सुबह
बिकॉज मॉर्निंग का टाइम इतना प्रोडक्टिव टाइम है कि उसमें आप बहुत ही एफिशिएंट वर्क कर सकते हो, कोई भी वर्क बहुत ही एफिशिएंटली एंड एफिशिएंसी के साथ विद लॉट ऑफ नाइस प्रोडक्टिविटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उस टाइम को सोने में निकाल देते हैं, सोते भी कम है, रात भर 2 बजे तक पढ़ाई करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, 2 से 3 बजे सोएंगे, 10 बजे तक सोएंगे। जो क्रीम टाइम है, जो बहुत ही पोटेंट टाइम है, बेस्ट टाइम ऑफ द डे, हमने कहाँ गवा दिया? बेकार की सबसे थर्ड क्लास एक्टिविटी में गवा दिया। जस्ट सी व्हाट कल्चर वी हैव ब्रॉट, so demoniac culture. So very important to all of us to get up early in the morning before sunrise. Therefore I have started this japa session every day 6:15 you, जिससे कि आपके पास एक मोटिवेशन हो कि हाँ उठना है, मुझे जपा सेशन में आना है। I have to chant every day in the morning. So at least वो मोटिवेशन रहेगा तो आप उठेंगे। और सुबह में उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अगर आपको अपने लाइफ में खुश रहना ना, हेल्दी रहना है, तो अगर आपने सुबह उठना नहीं प्लान किया, देन वेरी योर लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल एंड हेलिश वेरी सून। आप 30 टच करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर गारंटीड। सो आप लोग प्लान करिए, बहुत सारे लोग इसमें, जैसे मैं अनु एंड विश्वास, धीरज, पीयूष, साई, नरेश, मनीष, ये सब सुबह उठ जाते हैं और जपा सेशन में आ रहे हैं। एंड मेनी फ्यू अदर स्टूडेंट्स दे कम इन आवर क्लास। सो आप सब लोग उठिए, सुबह में प्रैक्टिस करिए, और इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा इन द बिगिनिंग फॉर 3-4 डेज। अलार्म लगा के रात को जल्दी सो जाइए, रात को लेट नाइट तक जगने की क्या जरूरत है? कुछ समटाइम्स वेरी ओकेजनली अगर कुछ बिजी शेड्यूल है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, तो आप ठीक है। बट अदरवाइज इफ वी हैव क्रिएटेड इट एज हैबिट एवरी डे, देन इट इज वेरी डेंजरस। सो चेंज दैट हैबिट, स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप ऑन टाइम। बॉडी का लाइफ साइकिल जो है ना, बॉडी का जो क्लॉक साइकिल है, उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे बार बार, तो बॉडी का जो क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक है, डिस्टर्ब हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए। सो बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और वो कंफ्यूज करते रहते हैं हम लोग उसको, वो बेचारा कंफ्यूज रहता है, रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, जबकि बायोलॉजिकल क्लॉक को दिन में जगना है और रात को सोना ऐसे बना है। इट इज डिजाइन, दिस बायोलॉजिकल क्लॉक इज गवर्न्ड बाय सन, सूरज के हिसाब से बना है। जैसे सूरज ढलता है, बायोलॉजिकल क्लॉक आल्सो वांट्स टू स्लीप, इट विल गिव इंडिकेशन दैट नाउ द टाइम इज टू स्लीप। और बॉडी में वैसे फंक्शंस भी होते हैं जब हम सोते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो एक्ट करते हैं व्हेन वी स्लीप इन दैट नाइट। रात में सोएंगे नहीं तो सारे फंक्शंस होंगे नहीं, so body will immediately, very soon it will develop so many problems. So it is the most important activity of the day, सबसे important activity है पूरे दिन में सुबह उठना। सुबह सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 90 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, 90 minutes बिफोर ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स ऑस्पिशियस, मुहूर्त मीन्स मोमेंट, auspicious time is this 90 minute before sunrise. This is the most auspicious moment of the day. और इस टाइम पे हम सोते हैं, वेस्ट कर देते हैं ऐसे। So we should not waste this time. We should get up and chant this time. Get up 6 o'clock, before 6 o'clock, 5:36, and get ready and join japa session and start your day with chanting Hare Krishna, glorifying Krishna. What a glorious activity it is. So your life will be very successful if you follow this simple thing. Get up early in the morning and chant Hare Krishna, and then whole day you do your activity. पूरा दिन आप एफिशिएंट रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत कुछ कर सकते हैं आप, वंडरफुल एक्टिविटी कर सकते हैं। यू कैन ब्रिंग अबाउट मिरेकल्स इन योर लाइफ अगर ये मॉर्निंग में थोड़ा सा उठ के चैंटिंग करने के जो प्रोसेस है अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लिया तो ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही सीरियसली लीजिए, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो दैट इज वेरी डेंजरस, वी शुड नॉट डू दिस। एक वीडियो और देखेंगे, छोटा सा वीडियो है, करंट लाइफ साइकिल क्या है अभी, मतलब व्हाट टू बी फॉलो नाउ।
होगा देख लो हमारे साथ। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं बनानी है, सिंपल लाइफ जीनी है। सुबह उठो अच्छे से, मॉर्निंग में कुछ टाइम अपने लिए निकालो और कुछ अपनी खुद की एक्टिविटी करो, पर्सनल एक्टिविटी, जिसमें आप कुछ आप एक्सरसाइज करें, चैंटिंग करें और अपना दिन प्लान करें कि आज क्या क्या करना है, एंड देन होल डे यू डू दोज एक्टिविटीज. Okay, so now time is. I'll stop here. So I request everybody to get up early in the morning and join our japa session from 6:15 to 7 o'clock and chant together Hare Krishna mantra. And by chanting Hare Krishna mantra, we can do wonders. सुबह उठने से ही आप वंडर करना शुरू कर देंगे, और सुबह उठ के चैंटिंग कर लिया तो यू विल डू मिरेकल्स. ओके, तो ये करना है सब लोगों को, इसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली. आप लोग इसको कमिट कर लीजिए, ट्राई मत करिए. ट्राई करेंगे तो आप नहीं उठ पाएंगे सुबह में. बोल रहे हम ट्राई करेंगे प्रभु, बिल्कुल ट्राई नहीं करना, आपको कमिट करना है कि यस उठना ही है. माइंड को ऑप्शन देना ही नहीं है. माइंड को आपने ऑप्शन दिया तो माइंड आपको चीट करेगा और सुबह सुलाएगा. सुबह माइंड का बिजनेस है आपको सुलाना, और आपका बिजनेस होना चाहिए कि माइंड को सुलाना. माइंड को सुलाना मीन्स माइंड को म्यूट करना. चुप, शांत से बैठो, मुझे उठना है, आई हैव टू गो इन चैंटिंग, प्रभु जी ने बोला. सो माइंड को नहीं सुनना है, आपने कमिट कर दिया तभी होगा ये. अदरवाइज आप ट्राई करेंगे ना तो डेली ट्राई करते रह जाएंगे, सालों साल गुजर जाएंगे, फिर भी आप बोलेंगे प्रभु मैं ट्राई कर रहा हूँ. डोंट ट्राई बट कमिट, एंड फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ यू टेक दिस रेजोल्यूशन इन योर लाइफ. So with this I'll stop. Thank you very much. Hare Krishna.